Hello everyone. Now in this video I'm going to talk about uh, the source based questions which are being asked in 11th class. There are 3 questions which you have to answer 5 marks. They are very scoring, but you need to give importance to them. So I have started in this chapter. The first source based question can be from the Islamic calendar which is given in your book. The Hijri era was established during the Caliph of Umar. हिजरी सन की जो शुरुआत हुई थी वो खलीफा उमर के समय में हुई थी. उमर की खिलाफत के समय हिजरी ईयर की को इस्टेब्लिश किया गया. एंड विद द फर्स्ट ईयर फॉलिंग इन 622 CE. 622 CE में पहला वर्ष फर्स्ट ईयर माना जाता है. ईसवी सन जो कॉमन एरा जिसको हम क्रिश्चियन एरा के नाम से जानते हैं उसमें अ डेट इन हिजरी कैलेंडर इज फॉलोड बाय द लेटर्स AH. हिजरी सन में तारीख को अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है. जैसे ईयर के बाद 622 CE लगा है, उनके यहाँ AH लगाया जाता है. द हिजरी ईयर इज अ लूनर ईयर ऑफ 354 days. Usually we have 365 days, but here in this lunar calendar they have 354 days. This is an important and remarkable point which you need to note. The first point is 354 days will be there, but of course 12 months are there. Muharram to Dhul Hijjah. There are 12 months of 29 or 30 days. Each day begins at sunset. प्रत्येक दिन जो है वो सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से. So the each day begins at the sunset and each month with the sighting of the crescent moon. The Hijri year is about 11 days shorter than the solar year. यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Therefore, none of the Islamic religious festivals, including the Ramzan fast, Eid and Hajj, corresponds in any way to seasons. जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सीजन्स के अनुसार त्यौहार पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौसम के अनुसार त्यौहार होगा ऐसा निश्चित नहीं होता है. दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे कहा गया है कि हिजरी सन जो है वो 11 दिन कम होता है, शॉर्टर देन द सोलर ईयर. जो सोलर ईयर होता है सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है. इसलिए कोई भी इस्लामी त्यौहार किसी भी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो मौसम के अनुसार पड़े. धार्मिक त्यौहार रमज़ान, रोज़े, ईद, हज मौसम के अनुरूप नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है. और हिजरी कैलेंडर की तारीखें there is no easy way to match the dates of Hijri calendar with the dates of the Gregorian calendar. जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम अंग्रेज़ी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तारीखों को फॉलो करते हैं, वो उनका मैच बैठे मिलने का कोई सरल तरीका नहीं है, उनको मैचिंग का कोई सरल तरीका नहीं है. अब one can calculate the rough equivalence between the Islamic and Gregorian Christian years with the following formula. H into 32 by 33 plus 622 is equal to C. This is the common formula which we can use, but this will calculate something rough, not exactly the same. Okay, so now a few questions are there which you need to answer. When was Islamic Hijri era established? The Islamic Hijri era was established during the Caliph of Umar, with the first year falling in 622 CE. Why Hijri year is 354 days only? It is 2 marks question. हिजरी ईयर 354 डेज का क्यों होता है? बहुत सिंपल दिया हुआ है आपके पैराग्राफ में, दैट इट इज़ 11 days लेस
though it has 12 months, but it is 11 days less because it is a lunar calendar. Each day begins at sunset and each month with the sighting of the crescent moon. So it is shorter by 11 days. क्योंकि सन और मून के कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. Then very direct and easy question, write the formula with which one can calculate equivalence between the Islamic and the Gregorian Christian era. The formula is given that you have to copy down, but most of the times children, what they do is they do not care for these questions, but they carry 15 marks out of 80. So you need to give importance to these questions. Though the questions are very easy, you find the answers sometimes in the book, in the text. Sometimes you do not get that some previous knowledge is included in that. So children, please give importance to that. If you give importance to these questions and answers, you will very easily score marks, and out of 80, if you score 30, then it is more than enough to pass 11th class. So these are a great support for you to pass 11th. Thank you very much.